Alright, the question here is telling us that a person cycles the first 350 kilometers of a 470 kilometer journey at a certain average speed, and the remaining distance at an average speed, that is 15 km per hour, less than that for the first part of the journey. If the time taken for her to travel each part is the same, find the average speed for the second part. So the journey consists of two parts. The total journey is of 470 किलोमीटर. एक जर्नी है जिसका टोटल डिस्टेंस 470 किलोमीटर है. इस जर्नी को टू पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. फॉर फर्स्ट पार्ट यू कैन सी दैट द डिस्टेंस इज़ 350. तो अगर फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस 350 होगा तो सेकंड पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा? सेकंड पार्ट विल बी 470 माइनस दिस. सो 470 में से जब आप 350 माइनस करेंगे, द डिस्टेंस विल बी 120 kilometers. So for the first part the distance is 350 and for the second part the distance is 120. Now we don't know what is the speed in the first part, so speed we can take as x, and for the second part the speed is 15 kilometer per hour less, right? So we always relate the second unknown with x. We cannot take the second unknown as y. The first unknown is the speed of the first part. हमें नहीं पता कि फर्स्ट पार्ट में उसकी स्पीड क्या थी, तो हमने उसको x कंसिडर कर लिया. सेकंड पार्ट की स्पीड भी हमें नहीं पता, तो सेकंड अननोन को हम y कंसिडर नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू रिलेट द सेकंड अननोन विद x. So how are we going to develop the relation? By reading the wordings of the question. The question is saying it is 15 km per hour lesser. So this will be x minus 15. The expression for the second part will be x minus 15. Okay, now the question is telling us that the time taken for her to travel each part is same. Time taken for first part and time taken for second part, both of them are equal. The time is equal, and we know that time is calculated by the formula distance divided by speed. The formula to calculate time is distance divided by speed. तो फर्स्ट पार्ट का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस और स्पीड यूज़ करेंगे, और सेकंड पार्ट का टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड पार्ट का डिस्टेंस और स्पीड यूज़ करेंगे. वी कैन सी दैट द डिस्टेंस फॉर सेकंड पार्ट इज़ 120, तो हमने d की जगह 120 इनपुट कर दिया, एंड द स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट इज़ x माइनस 15, तो हमने स्पीड की जगह x माइनस 15 इनपुट कर दिया. इसी तरह फर्स्ट पार्ट के लिए द डिस्टेंस इज़ 350, so in place of d we are inserting 350, and in place of speed we will input x. Now we know that the speed of first part is 350 upon x, sorry, the time for the first part is 350 upon x, and the time for the second part is x minus 120 upon x minus 15. ये पूरा एक्सप्रेशन 350 अपॉन x फर्स्ट पार्ट के टाइम को शो कर रहा है, और ये पूरा इंटायर एक्सप्रेशन 120 अपॉन x माइनस 15 ये सेकंड पार्ट के टाइम को शो कर रहा है. एंड बोथ ऑफ देम आर सेम, सो वी विल पुट इक्वल्स टू साइन इन बिटवीन देम. दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हमने इन दोनों के इन बिटवीन इक्वल्स टू का साइन इनपुट कर दिया. So now when we solve this equation we will get the value of x, and what is x? X is the speed of the first part. So when you solve this equation this will become you can cross multiply here, so this will be 350 multiplied by x minus 15 equals to 120 multiplied by x will be 120x. So when you open the bracket, 350 multiplied by x and 350 multiplied by 15, so 350 multiplied by x is 350x, and 350 multiplied by 15, when you multiply 350 with 15 this will be 5250. 5250. Now x is always added and subtracted with x, so we will subtract this 120 with 350. This is 350x, this is 350x, so we will subtract 120x from 350x because we are shifting this 120 on the other side. 5250 we will also shift on the right side, so it will become positive. Now 350 minus 120
350 minus 120 is 230. So this will become 230x equals to 5250. Now when you shift 230 on the other side, it will be divided. So 5250 divided by 230, we will cut 0 with 0, and 525 divided by 23, this will become, so 23 ones are 23, remainder is 9, and then this is 19, 23 twos are 46, so remainder will be 16, sorry, not 16, 6, remainder is 6. Now we carry this 5. Now again 23 twos are 46, so remainder will be 9, remainder will be 19, and when you put a decimal, you can add a 0 here, this becomes 190, so 23 eights is 184, so this will be 22.8. so x is 22.8 kilometer per hour, which is the speed of the first part. Speed of the first part we took as x, so this is 22.8, but the requirement is to find out the speed for the second part. So the speed of the second part is x minus 15. So for second part we are going to subtract 15 from the value of x, right? So speed will be x minus 15. X is 22.8 minus 15. When you do 22.8 minus 15, this will be 7. Yes, this will be 7.8 kilometer per hour. This is the speed for the second part.